So hello everyone, I'm Devanshu Sharma and welcome you all to the one-shot revision of perimeter and area for class 7. So in this topic, we are going to cover what are the different units of measurement along with perimeter and area of different shapes like square, rectangle, circle, parallelogram and triangles. So without any further delay, let's start the topic. Okay, so first of all, we'll start with the different units of measurement. So I would say that unit for perimeter is centimeter, meter, millimeter, decimeter, kilometer and so on. Similarly, units for area is meter square, centimeter square, kilometer square, millimeter square. So there's a square over the unit. And if we are talking about volume, that we are going to study in next class, that is class 8 and mensuration, उसमें unit होता है meter cube, centimeter cube, decimeter cube and so on. So let's try to understand how these unit systems work. So perimeter, if we talk about the definition of perimeter, perimeter is just the length of the boundary of that particular 2D shape. So if we are talking about, let's say that if we are talking about a rectangle like this, okay, so if I start from point A and covers the entire distance and reaches again to point A, ओके जब मैं पूरा डिस्टेंस कवर करके फिर से पॉइंट ए पे आता हूं, सो जो टोटल लेंथ है जो मैंने कवर किया है दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर. तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? इट इज सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर एंड सो ऑन. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द पेरीमीटर का यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन. ओके. Similarly, if we are talking about area, area is the region enclosed in a 2D shape. जो ये पूरा region enclosed है in a 2D shape. Now we are talking about a 2D shape. So we have to take two dimensions. Okay, we will take two dimensions, which is in this case length and breadth. Okay, and we know that the area of a rectangle is length into breadth. So let's say if the length is in centimeters and the breadth is also in centimeters, दोनों ही centimeters में है, और अगर मैं सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से ही मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो क्या मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा? This we have already studied in the chapter exponents and powers. If I multiply one thing by itself another time, तो मुझे square, cube, power 4 and so on I'll get. Okay, so similarly here the units are centimeter square, meter square, kilometer square, millimeter square and so on. So now if I want to talk about volume, volume ka formula is length into breadth into height. It means all the three dimensions are involved in that. All the three dimensions are involved in that. So centimeter into centimeter into centimeter, which will give me eventually centimeter cube or meter cube or kilometer cube. सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, और भी बहुत यूनिट्स हो सकती है. बट वी हैव टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग कि पेरीमीटर में जो यूनिट है उस पे पावर 1 होता है. अगर मैं एरिया की बात करूं तो यूनिट पे पावर 2 होता है. अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो यूनिट पे पावर 3 होता है. दैट इज ऑल वी वांट टू अंडरस्टैंड. ग्रेट. So let's understand and try to convert one unit to the other one. Okay, so let's start with convert 100 meters to centimeter. First of all, we need to remember one thing, that 1 kilometer is equal to 1000 meters. This we all know. 1 meter is equal to 100 centimeters and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. This we already know, right? Okay, now अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, then can I say 1 meter is equal to 1 by 1000 kilometer? It is absolutely right. Similarly, 1 centimeter is equal to 1 by 100 meters and 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeters.
I hope that we are all writing this down because ये बहुत use आएगा while doing the questions and while converting one unit to the other one. Okay, let's see the conversion then. So now let's do a question on the same. So we need to convert 100 meters into centimeters. So can we do this thing that we already know 1 centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter. So 100 and this meter will be written as 100 centimeters. क्योंकि 1 meter का conversion है 100 centimeters. So this would be equal to 10,000 centimeters. Okay, let's do another conversion. So in this, we need to convert 100 centimeter square into meter square. So this 100 centimeter square can be written as 100 centimeter into centimeter. कोई problem नहीं है because it is a centimeters का square. And we already know that 1 centimeter is equal to 1 by 100 meters. Right? 1 centimeter is equal to 1 by 100 meters. So मैं ऐसा कर सकता हूँ 100 into centimeter को 1 by 100 मीटर लिखा और इस सेंटीमीटर दूसरे वाले सेंटीमीटर को भी 1 by 100 meters लिखा. Now 100 cancels out and it will be equal to 1 by 100 meter square. That's all. Let's do another conversion for a cubic power. So 100 centimeter cubes into meter cubes. Okay, so this is basically meter cube. So 100 centimeter cube into meter cube, what will do? 100, there are 3 centimeters in the process. So we need to convert all 3 into meters. Correct? And one of the 100 will cancel out and will be left with 1 by 10,000 meter cube. That's all. This is how we can do all the conversions अगर हमें वो table याद है जो हमने अभी बनाई थी. Now let's move on to the next thing, that is square and rectangles, and we will try to calculate what is the perimeter and the area of the same. Okay, so perimeter of a square and a rectangle, let's make a rectangle. Okay, so this is a rectangle and this is a square. So perimeter के बारे में we have already talked about. It is the length of the boundary, basically total length of the boundary of the structure or the 2D shape. Okay, so if we are talking about, let's say this is length, obviously this will also be length and this will be breadth, this will be breadth. So if I want to walk around the entire structure of this rectangle, I have to cover the length twice and the breadth twice. So I would say that the rectangle ka perimeter should be equal to length plus breadth plus breadth, and it will be equal to twice of length plus breadth. And if we are talking about a square, let's say that the side of the square is A. So I have to cover A 4 times. चारों तरफ पे A है, so I have to cover A 4 times to calculate the perimeter of the square. So for square, the perimeter should be equal to 4A, where A is the side of the square, L and B are the length and breadth of the rectangle. So now we are done with the perimeter of square and rectangle. Let's talk about the area. एरिया के बारे में हमने बात करी थी. What is area? It is the region enclosed by the 2D shape. Region enclosed by the 2D shape. So for a rectangle, the area is equal to length multiplied by the breadth. And for a square, the area is side ka square or side into side. And in our case, the side of the square we have taken as A. So it should be A into A, which eventually be equal to A square. Okay, I hope that we are all able to understand what is the perimeter and area of a square and a rectangle. Now, let's talk about one more thing which is quite important. So, the room which we are in, जिस रूम में मैं हूं, जिस रूम में आप हो, if we want to paint the room, okay, if we want to paint the room, हमें room को paint करने में, do we paint the ceiling or the floor? No. जब भी रूम को पेंट करना होता है, we always talk about the 4 walls. So there are a lot of questions where you will see the question is asking that you have to paint the room and have to calculate what is the cost of painting. So if we want to calculate what is the cost of painting a room, in that we have to calculate the area of the 4 walls, क्योंकि ceiling
और फ्लोर को पेंट नहीं करते until and unless it is specified in the question। तो हमें खाली 4 वॉल्स को पेंट करना है। अभी 4 वॉल्स को पेंट करने के लिए जस्ट इमेजिन वन थिंग कि अगर मेरे सामने वाली वॉल है, ओके तो सामने वाली वॉल एक तो लेंथ से बनी होगी और एक हाइट होगा उसका। वन ऑफ द डायमेंशन शुड बी द लेंथ एंड वन ऑफ द डायमेंशन शुड बी द हाइट। सिमिलरली मेरे बैक वाले वॉल पे भी वन ऑफ द डायमेंशन शुड बी द लेंथ एंड वन ऑफ द डायमेंशन शुड बी द हाइट। तो दो वॉल्स का एरिया तो मैं ऐसा कह सकता हूं दैट इट शुड बी इक्वल टू लेंथ into height plus length into height। These are the walls which I am talking about, the front wall and the back wall, that is length into height plus length into height। If we are talking about the side walls, दोनों साइड वाली वॉल्स की अगर बात करूं तो एक तो ब्रेथ होगा नीचे और एक हाइट होने वाला है, राइट। सेम गोज फॉर द अदर साइड ऑफ द वॉल, दोनों साइड में एक ब्रेथ होगा और एक हाइट होगा। तो अगर हम 4 वॉल्स की बात कर रहे हैं तो उसका एरिया इतना आने वाला है, दैट इज ट्वाइस ऑफ LH plus twice of BH। Now in like other classes in algebra we have learned about this thing that we can take something out as common, right। तो इसमें मुझे 2H common दिख रहा है and inside I'll be left with L plus B। okay so area of 4 walls का फॉर्मूला आता है ट्वाइस ऑफ हाइट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जो कि पेंटिंग वाले क्वेश्चंस में यूज होएगा। परफेक्ट, ओके लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस। So a door frame of dimension 3 meter cross 2 meters is fixed on a wall of dimension 10 cross 10। So we have, so I'll make a rough structure। So basically this is the wall we are talking about and the dimensions are 10 cross 10, 10 meters cross 10 meters और एक डोर फ्रेम उस पे लगा हुआ है। तो ऐसा कुछ डोर फ्रेम होगा और उसके डायमेंशंस बोल रखे हैं दैट दिस इज 3 क्रॉस 2। कभी भी डोर फ्रेम को या विंडोज को पेंट नहीं करते, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, दैट्स व्हाई द डायमेंशंस ऑफ द डोर फ्रेम इज गिवन। नाउ फाइंड द टोटल लेबर चार्ज फॉर द पेंटिंग द वॉल 10 क्रॉस 10 वाला, इफ द लेबर चार्ज फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज 2.5 rupees। So first of all we will calculate what is the total area that is need to be painted and we'll multiply it with the rate। okay so first of all calculate what is the total area of the wall, that is 10 into 10 which is 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर तो टोटल एरिया ऑफ द वॉल है, लेकिन डोर को पेंट नहीं करेंगे। डोर का एरिया कितना आएगा 3 into 2 that is 6 मीटर स्क्वायर। डोर को पेंट नहीं करना, सो वी कैन से अ टोटल ऑफ 100 minus 6 that is equal to 94 मीटर स्क्वायर का एरिया नीड्स टू बी पेंटेड। अभी यूनिटरी मेथड याद करो, that if 1 meter square will cost 2.5 rupees, so 94 meter square should cost 94 into 2.5, this much amount needs to be painted। So this is how we are going to do questions of painting a wall या फिर area calculate करके we'll get the total cost of the work and all those things। Okay, let's do another question। So in this question it is asking that the area of a square and a rectangle are equal। We'll make a rectangle and a square। So area of a square and a rectangle are equal if the side of the square is 40। मतलब स्क्वायर की तो चारों साइड्स बराबर होती है। सो इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 40 एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 25, ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर की, सो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अज्यूम दैट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज L। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो आई वुड से 25 L सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होने वाला है। सिमिलरली एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होना चाहिए, साइड इनटू साइड 40 into 40 centimeter square। So can I say that both the area should be equal because it is given in the question कि rectangle और square का area बराबर है। So
25L should be equal to 1600 and L should be equal to 1600 divided by 25. And if we calculate, this should be equal to 25 into 6, 150, and 25 into 4, 100. So 64 centimeters should be the length of the rectangle. तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं where we have to compare the area, okay, and get one of the dimension of one of the figure. Okay, another question. So area of a square park is same as of a rectangle. Similar question. Square park और rectangle का area बराबर है. ठीक है, this is the square and this is the rectangle that we are talking about. If the side of the square park is 60 and length of the rectangle is 90, we have to find out what is the breadth of the rectangle. I would say कि आप अब easily ये question कर पाएंगे. कैसे? Area of the square would be 60 into 60 and length of the rectangle is equal to 90. breadth हम b मान लेते हैं, दोनों का एरिया बराबर कर देंगे and your breadth will be equal to 60 into 60 divided by 90. I hope that you are able to do the calculation. Quite a simple one. Great. So let's move on to the next question. The door of length 2 meters and breadth 1 meter is fixed in a wall. एक कोई wall थी जिसमें हमने एक ऐसा 2x1 वाला door fix किया. Now the length of the wall is given as 4.5 and the breadth is also given, which is 3.6. We have to find out what is the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing is given as 20 per meter square. इसमें भी same काम करना है. First of all, calculate what is the area of the wall. Area of the wall क्या होगा? Total area of the wall would be 4.5 into 3.6. उसमें से we have to subtract what is the area of the door, क्योंकि डोर को पेंट नहीं करते हैं या फिर व्हाइट वॉश नहीं करते. सो एरिया ऑफ द डोर वुड बी 2 into 1. अभी ये जो भी एरिया आता है उसको कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग से या फिर रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे. 1 मीटर 20 रुपए में होता है, तो इतना मीटर कितने में होगा? into 20. दिस वुड गिव यू द फाइनल आंसर. ओके, so इसी टाइप के क्वेश्चन you will be getting in area and perimeter of square and rectangles. Now let's move on to the next part of the video, that is triangles का area and perimeter. First of all, if we are talking about perimeter के बारे में हमने बात करी है, that it is the length of the boundary. तो ट्राइंगल का अगर मैं perimeter पूछता हूं, so it is just the total length of all the three sides. If the three sides are A, B and C, so the perimeter should be equal to A plus B plus C. That's it. Perfect. Now, let's talk about rectangle and the triangle. One more thing, we have to remember that 1 hectare is equal to 10,000 meters square. ये कभी कभार questions में आपको hint में नहीं दिया जाता. So we need to remember this conversion. Always remember the conversions. 1 centimeter is equal to how many kilometers and so on. So 1 hectare is equal to 10,000 meters square. Great. So if we are talking about a rectangle, so can we say that rectangle is made up of two congruent triangles? Let's see. अगर मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं तो रेक्टेंगल डिवाइड हो जाता है दो ट्राइंगल्स में. अभी देखते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट कैसे कह रहे हैं. कॉन्ग्रुएंट में हमने देखा था कि द मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल और द मोस्ट बेसिक मेथड टू फाइंड आउट वेदर टू ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, उसके लिए हम सुपरपोजिशन करते थे, एक को उठा के दूसरे पे रख देते थे, राइट. सो विल डू द सेम थिंग हियर. तो यहां पर अगर मैं इनको सुपरपोज करता हूं तो वो 100% कवर करता है. सो वी कैन से दैट अ रेक्टेंगल, in a rectangle, if a diagonal is drawn, the rectangle is divided into two congruent triangles, right? If we are talking about a square में भी the same thing is happening. अगर एक स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ करता हूं, अगर एक डायगोनल ड्रॉ करता हूं, it will divide the triangle into two congruent, it will divide the square into two congruent triangles. अगर दोनों डायगोनल ड्रॉ करता हूं, it will divide the square into four congruent triangles. Okay, so we need to remember this thing. And with this logic, can we say that area of rectangle is equal to twice the area of a triangle?
करेक्ट है। जो ट्राइंगल बन रहे थे, बिकॉज देयर वर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का एरिया मिलाकर मुझे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिल रहा है, राइट। सो ऐसे ही इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर में चार कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं। तो अगर आपको स्क्वायर का एरिया बोल दिया लेट्स से 64, और आपसे पूछा इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया कितना होगा, सो 64 by 4 दैट इज 16 16 16 एंड 16, चारों का एरिया 16 16 16 16 होने वाला है। परफेक्ट। Now, let's move on to the next thing, that is square and a triangle, but it is a continuation. Okay, so this is a parallelogram. Let's try to understand what is the area of a parallelogram and let's do the proof of the same. तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये अगर लेंथ है, ओके, एंड इफ दिस इज द हाइट, ये हमारा साइड का मेजरमेंट नहीं है, ये हाइट है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स। सो उसको प्लीज अलग से ध्यान रखना है। ओके, नाउ लेट्स सी दैट अभी मेरे पास मैंने क्या किया, ये जो लेंथ थी या फिर ये जो हाइट थी इसको शो कर दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द ट्रांजिशन दैट इज गोइंग टू हैपन। सो इन दिस, क्या मैं एक साइड का ट्राइंगल उठा के दूसरी साइड पे रख देता हूं, सो आवर पैरेललोग्राम विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेक्टेंगल। तो एरिया तो सेम ही रहने वाला है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसका भी द पैरेललोग्राम विच वी हैव टॉक्ड अबाउट, जिसमें हमने बेस लिया था और एक हाइट थी, ठीक है, एक बेस था और एक हाइट थी, तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। एंड वी हैव सीन द प्रूफ कि अगर एक साइड का ट्राइंगल उठा के दूसरी साइड पे रख दूंगा, आई विल गेट द प्रूफ ऑफ द सेम। ग्रेट। Now let's see the area of a triangle. Now area of a triangle कैसे निकालते हैं? अभी ऐसा करते हैं, इस ट्राइंगल के साथ एक कॉपी ऑफ द ट्राइंगल ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा कुछ। Both the triangles are congruent to each other and we can see that this is a parallelogram after joining both the triangles. तो parallelogram का एरिया कितना था, बेस इनटू हाइट, अभी लास्ट स्लाइड में देखा। तो एरिया ऑफ वन ऑफ द ट्राइंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ so all the congruent triangles are equal in area. We were talking about congruent triangles. तो एक नोट हमेशा ध्यान रखना, सारे congruent triangles का एरिया बराबर होता है, but vice versa is not true. सारे एरिया सेम वाले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ठीक है। इफ वी आर श्योर दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उनका एरिया इज गोइंग टू बी सेम, दैट इज फॉर श्योर। बट इफ टू ट्राइंगल्स हैविंग द सेम एरिया डजंट मीन कि वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ग्रेट, लेट्स डू सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द सेम. So one of the side and the corresponding height of a parallelogram is 4 and 3 centimeters respectively. We have to find out what is the area of the parallelogram. So बहुत simple सा question है कि आपको base दे रखा है और उसका corresponding height दे रखा है. Base दिया और corresponding height दिया, it means that you just have to do base into height. So the answer would be 4 into 3, that is 12 centimeters square. That would be the correct answer. Perfect. Let's move on to the next question. The two sides of a parallelogram are 6 and 4 centimeters respectively. Let's make the diagram. So let's say that this is the parallelogram. बहुत rough structure है, देखते हैं. So A, B, C, D. So let's say that the two sides of the parallelogram, this is 6 and this is 4, and the opposite sides will also be 6 and 4 respectively. Now height corresponding to the base CD, मतलब इस वाले बेस के corresponding height, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, this is 3 centimeters.
तो ये पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD. नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. कैन आई से दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ऑफ दिस पैरेललोग्राम ABCD can be written as the base which is 6 into height that is 3. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो 6 into 3 that is 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. नाउ क्या मैं किसी और तरीके से भी एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं. अभी हमने इसको या फिर इसको बेस पकड़ा. What if I want to take the base as BC और AD? अगर मैं let's say AD या फिर BC का बेस लेता हूं तो क्या करूंगा? In that case, the height would change and it would be the distance between the parallel sides BC and AD. मतलब फिर मुझे ये वाली हाइट चाहिए होगी. ओके तो इस हाइट को लेट्स से h बोल देते हैं. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम शुड बी इक्वल टू 4 into h. 4 into h. लेकिन हम तो एक ही पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग एरिया तो नहीं हो सकते. सो इट मीन्स दैट बोथ द एरिया शुड बी सेम. सो हाइट कितनी होगी? 6 into 3 डिवाइडेड बाय 4. तो इसने जो पूछा है इन द सेकेंड क्वेश्चन दैट द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द बेस AD, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या हाइट होने वाली है, वो ये वाली हाइट थी और हमने निकाल ली दैट इज इक्वल टू h विच इज 18/4 which is equal to 4.5 centimeter. Okay, this kind of a question can also come in your exam. Next question. So अभी इस टाइप का दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अभी इसमें आपको अगर ये वाला बेस दे रखा है तो फिर हाइट कौन सी होगी? हाइट ये होती है, ठीक है. सो इसका एरिया अगर इफ आई वांट टू कैलकुलेट इट शुड बी 8 into 10 दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. As simple as that. Great. So this was all for triangles. Let's move on to the circles. Circle का area और perimeter कुछ अलग कहलाता है. First of all, perimeter of a circle is known as circumference of a circle, which is equal to 2 pi r, and area is equal to pi r square. So the distance around a circular region is known as the circumference, जो हम polygons में area के पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है. तो सर्किल में उसको सरकमफेरेंस का नाम दे देते हैं. एंड सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 pi r. सिमिलरली एरिया इज इक्वल टू pi r स्क्वायर. नाउ व्हाट इज दिस पाई? पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 और 3.14. आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो. ईदर यू कैन टेक 22/7 और 3.14. पाई की जगह यू कैन पुट दैट. पाई इज अ कांस्टेंट. ओके, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 22/7 या फिर 3.14 ही होता है. परफेक्ट. इसी बेसिस पे लेट्स डू सम क्वेश्चंस. So a gardener wanted to fence a circular garden of diameter 21 centimeter. Dia दे रखा है 21 centimeter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 round of the fence. 2 बार वो सर्किल के अराउंड फेंसिंग करेगा, मतलब 2 बार सर्कमफेरेंस कैलकुलेट होगा. So what is the circumference of a circle? That is 2 pi r, जिसको मैं 2 into pi into r ऐसा लिखता हूं. एंड वी ऑलरेडी नो दैट 2 into r is equal to d. सो हम इसको pi into d भी बोल सकते हैं. दैट इज द डायमीटर. इन दिस केस डायमीटर इज डायरेक्टली गिवन. सो pi is 22/7 and the diameter is 21. So it's 7 into 3, 21. So the circumference of the circle should be equal to 66 meters. अभी उसने 2 बार ये लेंथ कवर किया है. सो आई वुड से कि टोटल लेंथ ऑफ द रोप दैट शुड बी यूज्ड इज इक्वल टू 66 into 2. दैट इज इक्वल टू 132 meters. अभी ये बोल रहा है कि 4 रुपए का 1 मीटर आने वाला है. 1 meter cost ₹4. So 132 meters will cost 132 into 4. Correct है, which is 528 rupees. A total of 528 rupees will be spent on the fencing if I want to fence twice. Okay, great. एक और क्वेश्चन देखते हैं. So
Shazli took a wire of length 44 centimeters and bent it into a shape of a circle. उसने टोटल लेंथ लिया 44 सेंटीमीटर का और उसको सर्कल बना दिया, राइट? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर्कल का सरकमफेरेंस शुड बी इक्वल टू 44, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द आउटसाइड थिंग इज इक्वल टू 44, सो द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल शुड बी इक्वल टू 44. सो आई वुड से दैट सर्कल का 2 pi r is equal to 44. I have not even read the entire question. मैं सिर्फ एक लाइन से first of all I need to calculate what is the radius of the circle. So 2 into 22 by 7 into the radius that we don't know is equal to 44. Now 2 into 22 44 होता है और राइट हैंड साइड पे भी 44 है, तो कट कर देते हैं उसको. सो हमारे पास r is equal to 7 centimeters आ गया with the first sentence itself. Now we have to find the radius of the circle that we have already found. Then we have to find out what is the area. So area क्या होता है? Pi into r square. So 22 by 7 into 7 into 7. So 7 से 7 cancel out. 7 into 2 14, 7 into 2 14, 15 centimeter square. This is the area of the circle. So हमारे पास radius आ गया, that is 7 centimeters, and the area of the circle is 154 centimeter square. Now if the same wire is bent into the shape of a square, what will be the length of each of its sides? अगर सेम वायर को मैंने स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर अब 44 हो जाने वाला है. पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4a which is equal to 44. इसका मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर शुड बी 44 by 4 which is 11 सेंटीमीटर्स. ये भी मिल गया. एंड एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना होगा? साइड का स्क्वायर that is 11 into 11 which is 121 centimeter square. Now it is asking which figure encloses more area, circle or the square. किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है? So circle का एरिया ज्यादा है, that is 154. Now let's do some questions on the application of perimeter and area, and this is the first question. So two crossroads, each of width 10 centimeter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 and breadth 300 meters parallel to its sides. So the figure would be formed something like this. ऐसा कुछ फिगर बनने वाला है. ये हमारा रिक्टेंगुलर पार्क है और उसके बीच में हमने दो क्रॉस रोड्स बनाई है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे. सो ऐसी कुछ क्रॉस रोड्स होगी, एक ये क्रॉस रोड और लेट्स से एक ये वाला क्रॉस रोड. एंड इट इज गिवन दैट द टोटल लेंथ इज 700 and the total breadth is 300. It is also given that the width of each crossroad is equal to 10 meters. ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर. Now what we have to find out, first of all, area of the roads. अभी देखो, अगर मैं इस रोड का एरिया निकालने जाऊंगा, ठीक है, इस रोड का अगर एरिया निकालता हूं तो इस रोड का लेंथ या फिर ये वाला डायमेंशन तो 300 रहने वाला है. ओके, तो 300 and this dimension would be 10 meters into 10 which is equal to 3000 meters square. Okay, and if we want to calculate the area of this crossroad, that would be equal to, इसका length जो है that would be 700 into width जो है that is 10 meters which is given. तो इसका टोटल एरिया 7000 मीटर स्क्वायर आएगा. लेकिन क्या हमने एक चीज नोटिस करी कि ये वाला जो रीजन है ये दो बार कैलकुलेट हो गया. दिस रीजन इज कैलकुलेटेड ट्वाइस, तो एक बार तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों बार ये रीजन कैलकुलेट हुआ है. तो इसका रीजन दिस इज 10 क्रॉस 10, राइट, 10 क्रॉस 10 का है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसका एरिया 10 into 10 100 होगा. सो टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस रोड शुड बी इक्वल टू 3000 plus 7000 minus 100, that is equal to 9900 meter square. That is the total area of the crossroad, and we have to find out the area of the park excluding the crossroad. तो अगर मुझे टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस रोड पता है
टोटल पार्क का एरिया कितना होगा 700 इंटू 300 दैट इज 21,000,000। इसमें से 9900 दैट इज द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड निकाल दूंगा, आई विल गेट व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड. So that's it, and we can convert the answer into hectare because 1 hectare is equal to 10,000 meter square. ये हमने अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले. Perfect. Now let's move on to the next question. So there are 4 equal circles, each of radius 5 centimeter, touch each other as shown in the figure. Find the area of the included region between them. So हमें ये जो blue वाला region है ना, इसका area निकालना है. So first of all, एरिया ऑफ द स्क्वायर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो अगर इतना सा ये रेडियस है, इफ दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर शुड बी इक्वल टू साइड इनटू साइड, वेयर द साइड शुड बी इक्वल टू 5 + 5 10. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10 इंटू 10 विच इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. और मुझे इन रीजन्स को एक्सक्लूड करना है. ये 4 क्वार्टर्स हैं सर्किल के, ठीक है, और 4 क्वार्टर सर्किल के मिला के एक पूरा सर्किल बन जाता है. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इसमें से एक 5 सेंटीमीटर के रेडियस वाला सर्किल पूरा माइनस कर दो, क्योंकि 4 क्वार्टर माइनस करने हैं मतलब एक पूरा सर्किल माइनस कर दो. करेक्ट है. सो सर्किल का एरिया शुड बी इक्वल टू पाई, दैट इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर. 22/7 इंटू आर स्क्वायर. तो जो भी सर्किल का एरिया होगा उसको माइनस कर दो स्क्वायर के एरिया में एंड यू विल गेट द रीजन, शेडेड रीजन. ओके, शेडेड रीजन का एरिया यू विल बी एबल टू गेट. परफेक्ट. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. सो व्हाट वी कैन डू, area of the square, first of all this is a square, right? So area of the square कितना होगा, area of the total area of the square would be equal to 20 × 20 which is 400 centimeter square. This is the area of the square. And if we want to calculate area of this triangle, इस triangle का area कितना होने वाला है, ये length 20 और ये length 10. So half into 20 into 10 that is equal to 100 centimeter square. Correct. If we talk about this triangle ka area, that is half into 10 into 10 which is 50 centimeter square. And if we talk about this area, that is half into 10 into 20 which is again 100 centimeter square. तो बचा हुआ शेडेड रीजन का एरिया कितना हो गया, क्या मैं ऐसा बोलूं, टोटल एरिया माइनस दिस 100 माइनस दिस 50 एंड माइनस दिस 100. So 400 minus 250 which is equal to 150 centimeter square. This is the area of the shaded region. Okay, perfect. Now let's move on to the last question, that is we have to find out what is the area of this particular shaded region. Okay, so first of all again we'll calculate what is the area of the rectangle, total area of the rectangle. So total area is 18 multiplied by 10, 6 plus 4 10 and 10 plus 8 18. So 18 into 10 that is 180 meter square. उसके बाद मैं अगर खाली इसका एरिया निकालना चाहूं, that would be half into 6 into 10 that is 30 centimeter square. This is centimeter square, I'm sorry. Okay, and if I want to calculate this area, it would be half into 8 into 10 that is 40 centimeter square. तो ये नॉट रिक्वायर्ड रीजन का एरिया सबट्रैक्ट कर देता हूं टोटल एरिया में से. So it will be 180 minus 30 minus 40 which is 180 minus 70 and the answer would be 110 centimeter square. मतलब इसका एरिया 110 centimeter square है. So that's all for the session of perimeter and area, and I hope that you all are able to understand the topic, and we'll meet in our next video. So bye bye.